नमस्ते बिटियाओं, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। आई एम विष्णु शामोत्या, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रोग्राम एमएससी केमिस्ट्री, सेकंड सेम, सेशन अरेनियम डाईएजोनियम आयन या डाईएजोनियम कपलिंग रिएक्शन। टुडे आई विल बी स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ अरेनियम आयन। अरेनियम आयन तो Ar2X is called or arenium diazonium salt. It is called diazonium ion. In the process of conversion of aromatic amine into diazonium salt is called diazotization. Primary amine aromatic primary amine react with the sodium nitrile in the presence of halogen, convert to arenium diazonium salt, aryl diazonium salt. Alanine react with the sodium nitride in the presence of HCl, convert to diazotization या BDC benzene diazonium salt, convert to benzene diazonium chloride. Clear? In this example of diazonium group, Sandmeyer and Gattermann reaction, replacement of diazonium group, preparation of chlorobenzene and bromobenzene, diazonium salt reaction, benzene diazonium chloride या BDC react with chlorobenzene, bromobenzene in the product. ठीक है, तो BDC react with copper in the presence of HCl and heat, convert to chlorobenzene. तो and BDC react with copper in the presence of Br and heat, convert to bromobenzene. Diazonium salt या benzene diazonium chloride react with CuCl copper chloride in the presence of heat, convert to chlorobenzene and N2 and CuCl. So in the presence of CuCl2, reaction name are Sandmeyer reaction, and in the presence of CuHCl, reactions names are Gattermann reaction. Okay, so in the presence benzene diazonium chloride react with the CuCl in the presence of heat, product chlorobenzene, reaction name Sandmeyer reaction. In the presence of CuHCl and convert to chlorobenzene, reaction name Gattermann reaction. Okay, next, replacement of diazonium group, formation of iodobenzene and benzene. Benzene diazonium chloride react with Ki in the presence of water, product convert to iodobenzene. Benzene diazonium chloride react with hypophosphorus H3PO2 in the presence of H2O, convert to benzene, hypophosphorus acid and hypophosphoric acid in the presence of acid in the presence of benzene diazonium chloride, convert to benzene. Azo-coupling reaction. Diazonium salt under suitable condition react with the reactive aromatic compound phenols, amines to form coupled compound of the types AR and double bonded NAR. तो डाई एजो कपलिंग मतलब अपन एजो का मिलेगा कि दो नाइट्रोजन ग्रुप किसी कंपाउंड से अटैच है तो उसको बोलेंगे डाई एजो कपलिंग रिएक्शन. डाइजोनियम साल्ट coupled with phenols in alkaline medium. Diazonium salt couples with amines in acidic medium. तो डाइजोनियम साल्ट यदि कपल होगा फिनोल के साथ तो वो होगा एल्केलाइन मीडियम में, और यदि डाइजोनियम साल्ट कपल्स विद एमीन के साथ कपल होगा तो होगा एसिडिक मीडियम में. सिंथेसिस ऑफ मैथिल. मैथिल is a acid dye used to dye silk and wool, but it is not fast to light and washing. It is alkalite, it is a yellow acid, yellow in acid is red, so it is used an indicator. Sulfuric acid is coupled with N, N dimethyl aniline under acidic condition. Follow the treatment with alkaline. Preparation of diazonium salt forms sulfuric acid.
Sulfuric acid react with the sodium nitride and HCl in the presence of 0.5 degree temperature, convert to parasulfuric and benzene diazonium chloride. Convert to parasulfuric acid and benzene diazonium chloride. In the second step, benzene diazonium salt coupled with N dimethyl aniline. N dimethyl aniline react with sulfuric acid benzene diazonium chloride in the presence of per acid acetic acid. Clear? In the presence of acetic acid, HCl is removed and product is formation. React with alkaline. In the next step, alkaline react with the product NaOH and convert to methyl फॉर्मेशन कंपाउंड, ठीक है, या मेथिल ऑर्गन कंपाउंड। ओके, तो ये अपने 3 स्टेप में अपने कपलिंग रिएक्शन पढ़ी। तो ये होती है डायएजोनियम कपल्ड रिएक्शन कि अपन यदि कोई 2 कंपाउंड लें और उन दोनों के बीच में नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन से यदि ऐड करवा दे, 2 कंपाउंड्स को नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन से ऐड करा दें तो उसको बोलेंगे डायएजो कपलिंग रिएक्शन। क्लियर? तो एजो क्या होता है? एजो किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन ग्रुप को एजो ग्रुप बोला जाता है। ओके, थैंक यू।